अच्छा, हाँ, सो क्लोज द रिएक्शन, दिस इज द अच्छा। इन्होंने एक लेटेस्ट अपडेट पुश किया है वेरी, ये मैक वालों ने। अच्छा अच्छा। यू शो लाइक हार्ट तो वहां से दिल निकलने लगेगा। यू शो थम्स अप तो पूरा स्क्रीन पे थम्स अप आने लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। यू डू यो तो पूरे पटाखे बजने लगेंगे। So again, this is very casual. Got The it. recording is on. So we'll be very casual when talking. ठीक है, we'll be So hi everyone. So today we have Mohit with us. Guys. This sounds like a YouTube podcast. But anyways, so we have Mohit with us. We're going to be talking a bit about college days, plus a bit about his corporate days. I mean, how from the college he stepped into the industry and how is it happening today. So college and corporate. So शुरू करने से पहले एक बार, like, can you just give us a quick tour of how college, like how did you decide going for an engineering, specifically choosing computer science? एक बार वो चीज, I mean that's the biggest I question. think- Was it like कि family में fix था कि engineering ही करना है? नहीं, it is not like that. I chose engineering, especially something related to computer science back when I was in 11th and 12th standard, right? So the teacher, I mean, the class teacher that I had, he was amazing in terms of explaining the concepts, and he used to bring DVDs and PPTs of various things like कभी Linux पढ़ा दिया, कभी कुछ kernel systems पढ़ा दिया, Very basic techy. हाँ, he was very techy, but it was never, मतलब he used to be a C++ teacher, but apart from C++, he has introduced us to a lot of things, right? जैसे मैंने बताया, कभी Linux पढ़ा दिया, कभी PPT चला दिया, हम लोग हमेशा कंप्यूटर साइंस लैब में जा रहे हैं, कभी कभी फैंसी स्क्रिप्ट्स भी दिखा देते थे और उससे भी फैसिनेशन बहुत होता था। हाँ, मतलब इस तरह की चीजों से सीखने को बहुत मिला। तो देखते हैं, मतलब उसके बाद आपका इंटरेस्ट बनता है तो आप सोचते हैं कि चलो, I wanted to do engineering because that's what all the people around me were doing. But truthfully saying, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट वहां से स्टार्ट हुआ 11th-12th स्टैंडर्ड से। उसके बाद सोचा कि चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो I had interest in mathematics as well as computers. तो ठीक है, तो मैथ्स में भी मतलब मैथ्स इज इट्स प्रीटी रेयर। So as a result of which I joined Delhi Technological University in 2014, and I opted for the course called Mathematics and Computing. So हाँ, तो Mathematics and Computing का जो कोर्स है उसमें they have abstract maths, जिसमें अभी मतलब जिसमें वो तुमको कोर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, एंड देन देयर इज पार्ट व्हिच इज कंप्यूटर साइंस, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस and all of these things included, right? So it is an amalgamation of both the worlds together. It was pretty interesting, right? So पूरे कॉलेज की जर्नी में मैथ्स से धीरे धीरे प्यार कम होता गया और कंप्यूटर से बढ़ता गया। मतलब मैथ वाज इतना मैथ्स पढ़ लिया कि चलो ठीक है, चीजें आएंगी तो कर लेंगे, बट कंप्यूटर साइंस वाज सो मच फन। Did by any chance the maths help in? Oh yeah, absolutely. मतलब अभी I hear people learning about machine learning and artificial intelligence, and they say उसके बेसिस में ये चीजें हो रही हैं। वो सब चीजें हमने पढ़ी है मैथ्स में, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ऑप्टिमाइजेशंस, ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर पार्ट ऑफ द करिकुलम. It helped huge amount of details because काफी कुछ चीजें मैथ्स एक बेस बना देता है, राइट? तो कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि यार अभी मैं कुछ कंप्यूटर साइंस में, लेट्स से मशीन लर्निंग में कभी आगे बढ़ूंगा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगी, राइट? क्योंकि एक बेस बन रहा था वहां से। तो इट हैज बीन ऑलवेज इंटरेस्टिंग. मैथ्स हैज ऑलवेज बीन एन इंटरेस्टिंग. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स लिटिल टू एब्स्ट्रैक्ट, तो उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट मोरलेस चीजें काफी कवर कर देता है, जैसे वेक्टर अलजेब्रा हो गया, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सब चीजें, दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ बिल्डिंग career in data science, machine learning, and not just these, right? Any other course, it gives you abilities to think, it gives you logical ability to think. ठीक है, एक quick question. So I want to understand the days before you realized you need to do something for a career के हिसाब से. How were those days in being in a college? So if you can just like give an overview of your college days, first year, second year, third year, how did that look like?
before you actually thought कि नहीं मैं क्या ही कर रहा हूँ यार, मुझे I think I should start working for a corporate and stuff. Absolutely. So first year was absolutely fun because तब बहुत ज़्यादा ये नहीं सोच रहे थे कि करियर में आगे क्या करना है. First year was mostly based on कि देखते हैं कौन से इवेंट्स कॉलेज में चल रहे हैं, कौन सी टेक सोसाइटीज या अलग अलग तरह की सोसाइटीज कॉलेज में चल रही हैं. आई ऑल्सो जॉइंड सोसाइटी NSS नेशनल सर्विस स्कीम ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम, एंड ये सब चीज़ें चल रही थी. तो फर्स्ट ईयर इट वॉज मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग, रीचिंग कॉलेज, just you know enjoying the whole ambience around it. So it was really fun. And during second year I started developing my interest in reading research papers about machine learning specifically. कि चलो देखते हैं, it's a new buzzword, I just wanted to see. So at that point of time थोड़ा सा HTML, थोड़ा सा CSS, थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड वाला पार्ट, थोड़ा सा बैक एंड का जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट, ये सब करना स्टार्ट किया. और मशीन लर्निंग के मुझे पेपर्स पढ़ना पसंद था, तो मैं मशीन लर्निंग के पेपर्स पढ़ता. अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इस तरह से निकल गया और बस मैंने ये इंश्योर किया कि कभी कॉलेज में कभी कंपनी आई तो वो इस वजह से मुझे रिजेक्ट ना करे कि तुम्हारी परसेंटेज कम है. तो दैट इज व्हाई आई मेड श्योर कि चलो परसेंटेज मेंटेन करके चलते हैं, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि CGPA की वजह से प्रॉब्लम हो जाए. ठीक है, तो आई मेड श्योर वो वाला पार्ट स्मूथली निकल जाए. तो इतना मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में किया. सो द रियलाइजेशन ऑफ working on academics happened in like after second year or so? It has always been the case. First year second year में मैंने मजे बहुत किए, but at the same time I made sure कि percentage dip ना हो. अच्छा. हाँ, तो आप एक minimum level of CGPA, जैसे हमने senior से सुना था कि आप अगर 8 CGPA maintain करते हैं तो आप most companies से eligible होते हैं. मैंने कहा अगर इतना मैं maintain कर लूंगा, मतलब इतनी percentage 75% या 8 CGPA अगर मैं maintain कर लूंगा तो it will not be a problem. ठीक है, बाकी कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, अभी के लिए इतना काफी है. Got it. So first year, how was your first? So by any chance you were in hostel or like? नहीं, I was a day scholar. You missed a lot of things then. I did miss a lot of things, but DTU के अंदर, especially colleges in Delhi, they don't, not all of them have hostels. So there was some rule that if you are living at a certain distance away from the college, only then you are eligible. So I used to travel in metro every day. It was a fun ride, honestly. I did miss a lot of things. Hostel is something I definitely miss, but then again, I mean, there were other things that there were other things. Out. I mean, it helped me actually maintain a good routine every day. So you wake up on time, you go to college every day, right? And you come back on time. So it brings a routine in your. Yeah, that's correct. I think उसपे memes भी हैं on the things like, if you're staying in a hostel, if your class starts at 9, you are leaving hostel at around 8:55 or you are waking up at 8:45. There are a lot of memes around it. That is correct. It has been the case with hostel guys. So I remember in my case, first year hostel specifically was very motivating. Specifically the first semester. पहुंचे घर पे, we got everything organized in our room, right? Like tail and shisha and comb and all those stuff. Like this is going to be our alishan room for next couple of years, right? Correct. But as in when we went a step ahead in the second semester and third semester, kya bed sheet, kya bucket, all lying here and there, correct. renting on to or relying on to someone else's stuff. I think that is why I asked कि hostel क्या था, because typically hostel starts with people doing this thing. Hostel में जाएंगे तो induction लेके चलेंगे. Specifically वो जो electric वाला नहीं होता. हाँ, छोटा सा. And the first realization happens कि हम उस electric kettle में Maggi बनाते हैं. And then we realize we're not supposed to cook Maggi in this. Maggi निकलते नहीं. ठीक है. And trust me, even back like few months back, I was having a discussion with few students who are in the first year. वो आज भी यही कर रहे हैं. This has become like a signature. ये convention बन गया. हाँ, वो नहीं छूटेगा. Yeah, this has become like a signature. Correct. So you've already briefed about the point until you realized you need to work. And so when was that moment when you realized here, I think ML कर लिया and ये सब, I think अभी now I need to focus on job and career and stuff, and I need to start preparing according to that? Oh, it actually happened through a realization. So at the end of second year,
companies used to visit our campus for giving internship. So that third year के last में आप internship कर रहे हैं. तो I remember this first company I sat in. It was Amazon. Yeah. And they were simple question. I was able to think कि कैसे करना है. I was not able to solve them at all. We can reveal. That's a vector वाला question. We were having a discussion a few minutes back. हाँ. तो I was that point I realized यार कुछ समझ तो आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है नहीं समझ आ रहा है. मतलब कैसे होगा नहीं समझ आ रहा है. सोच के लगता है अच्छा ऐसे हो जाएगा बट नहीं हो रहा है. That was I went out of the interview. मतलब पहले टेस्ट कोडिंग टेस्ट के बाद मैं बाहर निकला and I was like यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है. And that was pretty late for me to realize because अब कंपनीज आना स्टार्ट हो गई हैं. ठीक है. और in colleges like DTU when the companies start coming they'll come constantly for the first 1 month. I think July August का जो मंथ होता है उसमें रोज कंपनी आएगी. किसी दिन 2 कंपनी 3 कंपनीज भी आएंगी. अब प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट हैव गुड कोडिंग स्किल्स. आई कैन नॉट मुझे हो सकता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी बट मुझे कोड करना नहीं आता. ठीक है. क्योंकि मैंने तो पूरे टाइम रिसर्च पेपर्स पढ़े तो कोड करना नहीं आता है. अब काफी प्रॉब्लम हो गई उस टाइम क्योंकि जितनी कंपनीज आए निकल ही नहीं रही हैं. कुछ भी नहीं निकल रहा है. तो व्हाट हैपेंड वाज एट द एंड ऑफ दिस इंटर्नशिप सेशन I did not have a single company to go to internship to. So it became a little difficult for me. Made you feel a little bad कि questioning yourself. अब प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको रोज क्लासेस भी अटेंड करनी है and you have this constant the back of your mind you have this constant pressure कि यार कंपनी नहीं निकल रही है, इंटर्नशिप नहीं हो रही है. ठीक है. So it became a very problematic scenario. Then I decided कि चलो अब चीजें सर के ऊपर जा रही हैं, अब let's start studying. तो from September onwards I started revisiting everything. मैंने कहा चलो जो आता भी है एक बार वापस से पढ़ेंगे. स्ट्रिंग मुझे याद है Amazon के इंटरव्यू में कोई स्ट्रिंग का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया था स्ट्रिंग रोटेशन से रिलेटेड और वो मुझसे नहीं हुआ था. तो सबसे पहला जो टॉपिक मैंने पढ़ा स्ट्रिंग से रिलेटेड पढ़ा. मैंने कहा चलो देखते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं. तो धीरे धीरे एक टॉपिक पढ़ा. बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं पढ़ी. उस टाइम मुझको STL जैसी चीजें नहीं आती थी. ठीक है. ना मुझे वेक्टर्स के बारे में आइडिया था, ना मुझे डेक और ये सब चीजों हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं था. मैंने कहा एक करके करते हैं और टारगेट बनाएंगे जनवरी फरवरी तक खत्म करने का ताकि अगले साल प्लेसमेंट में कुछ हो पाए. ठीक है. तो धीरे धीरे मैंने चीजों को स्टार्ट किया. मैंने कुछ एरे से स्टार्ट किया. एरे के बाद वेक्टर्स पढ़ा, स्ट्रिंग्स, ये सब चीजों से धीरे धीरे मतलब जो मुझे गिग्स फॉर गिग्स या इधर उधर टॉपिक्स पढ़े. बस मैंने टॉपिक्स देखते हैं और जहां से मुझे क्वेश्चन दिखते थे. और मैंने एक चीज देखी कि अगर मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे बाउंस करता हूं तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रैक माय प्रोग्रेस. मेक सेंस 100%. तो आप एक प्लेटफॉर्म चूज कीजिए. जैसे मैंने उस टाइम मुझे याद है मैंने शायद लीड कोड चूज किया. ठीक है. लीड कोड पे मैंने हर टॉपिक के कुछ 15-20 क्वेश्चन करना स्टार्ट किया. तो धीरे धीरे और मैंने कभी कोशिश नहीं की मुश्किल क्वेश्चन से स्टार्ट करूं क्योंकि मुझे हमेशा पता था मुझे तो बेसिक से स्टार्ट करना है. तो आप इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए. धीरे धीरे इजी क्वेश्चंस बनते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. इजी क्वेश्चन से मीडियम क्वेश्चन पे जंप कीजिए. अगर मैंने 20 क्वेश्चन किसी टॉपिक के किए हैं और उसमें मैंने 10-12 क्वेश्चन इजी किया, मुझे कहीं बुरा नहीं लगेगा. मैंने कहा चलो कम से कम मेरे बेसिक्स तो क्लियर है. अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर मैं एक्चुअल फेस टू फेस इंटरव्यू में जाऊंगा तो कम से कम मैं लोगों को बता पाऊंगा कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. बट उसके लिए पहला राउंड क्लियर करना जरूरी था, विच इज कोडिंग. तो कोडिंग क्लियर करने के लिए आपको लीड कोड जैसे क्वेश्चन लिटरल प्रैक्टिस आपको लिटरली प्रैक्टिस करनी होगी. तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लीड कोड से, गिग्स फॉर गिग्स से, जहां से देखे 20 25 क्वेश्चन स्ट्रिंग्स के. उस टाइम भी कुछ टॉपिक्स होते थे जैसे ग्राफ हो गया, जैसे डायनामिक प्रोग्राम हो गया, जो बिल्कुल समझ नहीं आता था. धीरे धीरे उनको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश की कि चलो 10 क्वेश्चन करके देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार सॉल्यूशन, देखते हैं कैसे जाएगा. उसके बाद हम देखेंगे आगे कि हो रहा है नहीं हो रहा है. तो बस ऐसे. So your way of getting into the corporate and all of these things was through the campus placement, right? Yes, through which is like the best way to and the faster way, because if you miss that you probably have to go out and start looking for off campus and stuff, right? Yeah, you are absolutely right. This is the problem that people say कि sir कंपनीज आ रही हैं अभी इसमें करना है, नहीं तो फिर ऑफ कैंपस में बहुत चैलेंजिंग है. ऑफ कैंपस तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है. आई कैन अंडरस्टैंड. बाय एनी चांस टिल दिस पॉइंट वेयर यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली प्रिपेयरिंग, बिफोर दैट कोई इंटर्नशिप्स वगैरह आपने किया हुआ था? मेरे पास कोई इंटर्नशिप्स नहीं थी. मतलब ऐसा था कि उस टाइम हमारे जो प्रोफेसर होते थे उनके अंडर आप प्रोजेक्ट्स कर रिसर्च एंड स्टफ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर सकते थे. तो मैंने कहा यार इंटर्नशिप तो मिली नहीं कॉर्पोरेट वाली, तो एक काम करते हैं ये रिसर्च कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ही पकड़ लेते हैं. डज दैट काउंट
It does, as a matter of fact. If you have done any research project under any professor, it does come. And if it's not research, let's say if it's a normal internship working in startup here and there, so while you are applying for the big companies, right, the giants and the leaders in the tech space, so does it matter, like does it add any value ki, since you have an internship background, it is going to help you, or the company is going to prioritize you in terms of selecting or stuff, or is it like doesn't matter because everyone is going through a similar process of hiring, ATS and all those stuffs happening behind, so no one is like really watching your resume. करेक्ट. तो यार ऐसा है, एक चीज जो मैंने कॉर्पोरेट में आने के बाद रियलाइज की है कि जो SD1s होते हैं, जो एंट्री लेवल इंजीनियर्स होते हैं, स्पेशली इन टेक जायंट्स, राइट, दे आर वेरी जेनरिक रोल. दे आर सपोज्ड टू बी काइंड ऑफ लाइक लिक्विड, कि आप उनको किसी भी कंटेनर में डालो, उसी कंटेनर शेप में लेंगे. तो irrespective of the tech stack, irrespective of how where you have done internship, irrespective of how many projects you have done, the expectation from an SD1 is you should be problem solver in the terms कि अगर मैं तुमको कोई प्रॉब्लम दे रहा हूँ और मैं तुमको बोल रहा हूँ इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आई एम नॉट इवन, मैं तुमसे सोल्यूशन भी नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम उसका कोड लिख सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर कोड लिख सकते हो is the key. It's very important. You should be able to write code. You should be able to convert the ideas that are coming from top. Even you can also have your own ideas. You should be able to convert it into code and get things done, right? SD1s की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बस आपको कोड करना आना चाहिए, ठीक है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आप देख के डर जाएं, क्योंकि many times I've seen कि there are people who study C++ और Java और Python in the college, बट एक बार वो कॉर्पोरेट पे जाते हैं, वहाँ पे टेक स्टैक बिल्कुल डिफरेंट होता है. वो रूबी पे काम कर रहे हैं, हो सकता है वो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, एंड यू हैव टू लर्न एंड अडैप्ट वेरी क्विक. अब लर्निंग अडैप्टिंग वेरी क्विकली में वो वाला पार्ट रह जाता है कि यार मुझे तो C++ आता था. हाउ इजीली कैन यू ऑनबोर्ड इनटू न्यू टेक्नोलॉजी इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम SD1. Got it. So in my case it has never been a challenge or a roadblock. It has never been the case कि चलो internship नहीं मिली तो it is a roadblocker for me. So by the way, I forgot to introduce, so I'll just add, I forgot to introduce and give you the overview of the thing. So we have Mohit, and Mohit has a background of, he completed his graduation from DTU, joined Flipkart, then joined later Microsoft, yes, and then the Amazon, right? The current company he's working with Amazon. So we are just in a conversation where we are having a discussion and trying to break down the little things that would matter while you are in the process of applying for jobs and all those stuff. So let's come back to the point where the internship and stuff is happening. Now, so this is a very different question. Since you mentioned internship is not a deal breaker or is something which will stop you in not getting a job, right? Or it's something that if you have, you will for sure get a job, right? Correct, it is not something that is not a deal that is not a deciding factor. It's definitely not a deciding factor for you. Obviously that will be an add-on once you are part of the organization and working, because maybe someone who has not done any development or internship would go with 1x, and you have done the development, you might go with 2x in that case. Personally speaking, I think people who have done internship have slightly more exposure in terms of, because they have worked in a collaborative environment, right? They know how to use Git, they know how to use any kind of version tools, and they have been aware of how to settle. So they have 2 months or 4 months or 6 months kind of experience that they have gotten through their internship. It obviously adds on to your value, but it's not deal breaker, as I told before. So summarization is that you need to be a good problem solver and a person who's able to convert the solution to a code. Right? Correct. The general notion of learning data structure is to just solve, but no one ever thinks about the solve to kar liya, like we need to also code it to a working solution. Correct. So I've seen people who are a lot into competitive coding, right? So they do competitive coding on Codeforce. It's an amazing thing, and I totally appreciate it. But don't just miss out on one important thing, that at the end of the day, you are just a problem solver, right? You need to onboard into different technologies quickly so that you can make change, so that you can bring changes and bring impact quickly. Just one question. This is out of topic. So a lot of time people are always discussing about free versus paid internship, right? Ki
you should always go with the paid internship where you're being paid for the work you do. And some people say it doesn't matter if it's an internship and it's adding value and stuff. It's fine if you're going with free internships as well. Like, I just wanted to know your view. Like, would you be recommending, or maybe not recommending, let's say कहीं कोई ऐसी चीज़ ना follow कर ले कि वो इधर उधर हो जाए. But what is your point of view on कि internships? Is it necessary that you should always look for the paid, or is it fine if it's free? Well, stipend definitely is something that a person is looking forward to, especially if a student, it gives them joy. Correct. So if a company is offering some amount of stipend, if not a lot, then I don't know, it always has this factor of happiness that yes, we earned, we did hard work and we earned for it, right? I'm not sure about the concept of free internships, because at the end of the day, if a student is going, they may be learning. They are obviously is learning, but they are doing the work of the company, right? So they should be paid accordingly. If not a lot, at least their day-to-day operation amount that they're expending, right? It should be covered. So a minimum amount that they can handle, like तुम्हारा आने जाने का खर्चा या तुम्हारा meals का खर्चा. अगर इतना bare minimum cover हो रहा है, तो I think that's good. As long as you are getting to learn a lot of things. Good. Because in a lot of startups I've seen, I mean, in a lot of startups that I've seen is people get into internships, but they're traveling a lot, then they are not getting a lot of things to learn, and they're getting very repetitive work every day. कि चलो ये काम कर देते हैं, ये छोटा मोटा documentation भर देते हैं. So that's not that's a bad thing for a company to do to a person who's just there to get an exposure from. Right? So we don't want that. So always a paid internship, as long as it's paying just small amount to cover your 100%. Okay, so I think this is final year where you have actually literally started, like almost you're about to step into your final year, where you realized and you've started working on your problem solving skills, right? As a mentor, you've been a mentor, right? As a mentor, what would your recommendation be for anyone who's starting out with the data structure? क्योंकि what I have seen is कि from the day one itself, like the first year, अब तो DSA का तो न्यूज़ फैल चुका है हर जगह कैंपस में ना. फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक लोग DSA ही करते रहते हैं. एंड इवेंचुअली क्या होता है, फाइनल ईयर तक पहुंचने के बाद भी हो सकता है किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं. correct right? So what is the recommended approach? Because I see in your case you enjoyed your college life. After a point of realization, you worked for a very short duration where you were able to cover up all those shortcomings. So sometimes I feel ki is it that big of a deal? You end up spending like 3 years learning data structure, C++ for the entire computer science journey. So if not, like what would be the ideal recommended way to start with the subjects like data structure algorithm? I see. So back when I was in first year, हम लोग के जो C++ और C के कोर्सेज होते थे या जावा के कोर्सेज होते थे, that is the only thing that I did. उससे ये होता है कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड आ जाती है. मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में एक्सट्रीमली गुड होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. इन द फर्स्ट ईयर यू कैन जस्ट टारगेट वन लैंग्वेज, राइट? क्योंकि जब आप कॉलेज में आते हैं तो काफी लोग, सारे लोग C++ बैकग्राउंड या मतलब लैंग्वेज के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं. तो प्रॉब्लम उनके साथ ये रहता है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अडैप्ट टू न्यू थिंग्स. तो जस्ट लर्न C++ और एनी अदर लैंग्वेज फॉर दैट मैटर. आई डोंट really recommend these two languages, Python, Java, एक language, as long as you can make that language as the mother language. कि कोई कुछ भी बोलेगा तो कुछ कर देंगे उसमें, ठीक है? Getting that confidence is very important. I see a lot of failures because starting में it becomes very difficult for people to just learn. क्योंकि जब भी कोड कर रहे हैं compilation error आ जाएगा. स्टार्टिंग में जब आप लर्न करते हैं आपको नहीं पता कहाँ सेमीकोलन जाएगा, कहाँ इक्वल टू साइन जाएगा, राइट? स्टार्टिंग में it's a threshold. If you achieve that threshold, उसके बाद चीजें थोड़ा आसान हो जाती है. That's a keyword. हाँ, it becomes very important. Starting में बहुत difficult है यार. जितनी बार भी compile कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा कहाँ पे error है. There are people who enjoy that, and then there are people who get frustrated with that. Those people who get frustrated end up losing and end up feeling यार computer science मेरे बस की नहीं. But those people who are getting frustrated, they should continue doing because they haven't touched the threshold. It's almost there. Yeah. तुमको जब भी मुझे कोई कंपाइलेशन एरर आएगा मैं एक बार चेक तो करूंगा गूगल पे यार क्यों प्रॉब्लम आ रहा है. उससे कुछ तो पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रही है. आजकल तो इतने सारे टूल्स आ गए हैं, आप चेक करो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है.
आपको आराम से प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब उससे एडवांटेज ये हुआ कि मैंने एक लैंग्वेज सीख ली एंड आई डिडंट लूज होप। ठीक है, अगर एक बार वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया ना कि चलो अब चाहे मेरे कोड का सोल्यूशन गलत आएगा बट कम से कम उसमें कंपाइलेशन एरर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो आई नो व्हाट आई एम डूइंग इवन इफ दैट थिंग डज नॉट एंड अप giving me the right results immediately, I at least have a solution, right? yeah. अब सोल्यूशन को रेक्टिफाई करने के लिए यू हैव द नेक्स्ट 2-3 years कि चलो अब नया सोल्यूशन, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन सीखते हैं, बट अभी के लिए कम से कम कुछ करना तो आगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद आई थिंक द बेस्ट टाइम टू लर्न इज देयर इज 3 months or 4 months of time is enough to learn basic data structures। चाहे आप लिंक लिस्ट की बात कर लीजिए, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, क्यूज, स्टैक्स और नॉर्मल छोटे हल्के से ग्राफ के क्वेश्चन या ट्रीज के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगता है। आप अगर 2 हफ्ते लगा के एक सब्जेक्ट को भी खत्म कर रहे हैं, टॉपिक को भी खत्म कर रहे हैं ना, इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि अगर मैंने एक टॉपिक के ऊपर जैसे ट्रीज के ऊपर 10 क्वेश्चन कर लिए, दैट्स मोर देन इनफ इन द स्टार्ट। उसके बाद आप अगले टॉपिक पे जाइए, वापस आ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, बट अभी के लिए आपका एक बेस कवर हो रहा है, धीरे धीरे आप उससे बिल्डअप कर रहे हैं। तो वो वाली चीज में इतना टाइम लगता है। द रीजन आई वाज एबल टू कवर अप in my 3rd year was because I knew about C++ in the start, some amount of exposure to data structure and algorithm in the 2nd year because it was a part of curriculum। तो मुझे कुछ तो पता था कि चलो लिंक लिस्ट ऐसे बनती है, ट्रीज ऐसे बनते हैं, इवन दो मुझे इतनी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नॉलेज नहीं थी, बट मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स में पता था कि अच्छा चीजें ऐसे बनती हैं। इसीलिए I was able to cover up in the next 3 to 4 months। I remember October, November, December, January, February के around I did this practice so that I can sit in the placement in the in the start of the 4th year। Got it. So I remember you mentioning about the data structure and stuff, right? Correct. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, you mentioned about threshold। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है to how to like wake up every day and code थोड़ा and learn। Like what was your reasons to do it every single day? Like, how were you able to achieve it? मतलब procrastination बहुत होता है। Consistency is the key and it becomes very difficult। कि रोज उठ के क्वेश्चन कर रहे हैं। As much as consistency is a very good word, it becomes very difficult to achieve। real tough, right? So I think the best way that I can suggest you how I maintain consistency is through the people around you, right? You always have friends, you always have like-minded people around you जो तुम्हारे साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे आई हैव फ्रेंड्स जिनके साथ कहता है कि चलो आज हम लोग 2 कोड फोर्सेस पे क्वेश्चन करके आएंगे, आज हम इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन करके लाएंगे, हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, सो यू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, यू कीप ऑन इम्प्रूविंग। दैट्स हाउ, अगर तुमने उनके साथ एक स्ट्रीक स्टार्ट किया है कि चलो आज 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करते हैं, अगले दिन भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करते हैं, दैट्स हाउ यू मेंटेन streak, that's how you maintain consistency। Then there are another thing I have seen कि चीजें नहीं आने पे कितना प्रॉब्लम होता है। जैसे Amazon वाले इंटरव्यू में it was a blunder for me because I was not able to code। So then there were some part of me that wanted to get over that, and then there was also some part who was actually unintentionally competing with people around, right? क्योंकि कैंपस में कंपनीज आएंगी और अगर आपको अच्छी कंपनी में प्लेस होना है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंटली पुटिंग एफर्ट्स। काफी लोगों के साथ ऐसा रहता है कि हम लोग आज कर लेते हैं, नहीं हो पाया, आज थोड़ा बिजी रह गए। जस्ट कोशिश करो कि रोज कम से कम एक क्वेश्चन। तो एक चीज जो मुझे याद है मैंने की थी, क्योंकि मेरा मेट्रो का जर्नी 50-55 मिनट का होता था, तो रोज मैं घर से निकलते टाइम गिक्स के 2 आर्टिकल्स खोल लेता था और मेरा टारगेट ये रहता था कम से कम 2 आर्टिकल्स को पढ़ लूं। अगर मैं हैंड्स ऑन कोडिंग नहीं भी करूंगा ना तो कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। ठीक है, that actually brought a lot of difference। I was able to solve a lot of questions during that time। क्योंकि अगर मैं 2 क्वेश्चन के हिसाब से भी 3-4 महीने क्वेश्चन कर रहा हूँ, I have enough questions under my belt and I was able to understand things। धीरे धीरे कभी किसी दिन आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में जब होते हो तो आप एक्चुअली थोड़े से बिजी होते हो। ठीक है, आपको अपना इतने सारी कंपनीज आ रही होती हैं, ये सब मेंटेन करना होता है, एंड यू ऑल्सो हैव टू डू दिस। मतलब मेरे साथ तो आने जाने का ट्रैवल भी था, तो वो सब चीजें मेंटेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बट यस थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। बट देन अगेन ये वाली अप्रोच मुझे इतनी पसंद आई कि आई कंटिन्यू इट। अब जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ मैं उनको बता देता हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं। I think we should stop maintaining the Snapchat streaks and should start working on the different streaks that Mohit is talking about. And I think this is very ideal scenarios, right? Most of the time you would not have people with that much of ideal cases,
because बहुत procrastination होता है college life में. Correct. I think the key that you mentioned over here is to surround yourself with the right people and एक दूसरे को push करके and just keep doing and फिर वो automatically होता चला जाएगा. Correct. क्योंकि जैसे आप फाइनल ईयर में आएंगे ना, क्योंकि मेरे साथ प्रिपरेशन फाइनल ईयर में स्टार्ट हुई, जैसे आप फाइनल ईयर में आएंगे कॉलेज में फेस्ट स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो फाइनल ईयर है, you will get emotional, you have a lot of emotions attached to the place that you have visited for the last 4 years, right? So you want to attend all the events, you want to meet all the friends, क्योंकि बाद में एक बार आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है. Even though you guys will be living in the same city, it becomes very difficult to sometimes just hang out. Correct. So you'd want to attend all those events. ऐसी चीजों में ना हमेशा it becomes very difficult to maintain that streak. Correct. तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस का प्रॉब्लम आता है. और यहाँ पे बस अगर ये 2 क्वेश्चंस का मैं रोज बना लूं कि चलो 2 क्वेश्चन रोज करने हैं, हाँ, तो बन जाता है. 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अगर मैं 1 क्वेश्चन भी रोज करता हूँ तो मैं 3-4 महीने में मैं डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास आ जाते हैं. करेक्ट. ऑल्सो यू मेंशन एट वन पॉइंट कि जहाँ पे लीड कोड वगैरह आप काफ़ी यूज़ करते थे, एंड इन द अदर डिस्कशन ऑफ कैमरा डिस्कशन दैट वी वर हैविंग, लोगों की इंटेंशन ये हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके रखोगे तभी कुछ होगा जीवन में, राइट? बट आई थिंक यू क्लियरली मेंशन दैट starting off with the easiest, continuing to the easiest wala roadmap, and then maybe reaching out to the medium level is how you should look at it. And even easiest mein, the one discussion that we had was to start with, if you are even rewriting the codes, let's say Geeks for Geeks पे जो दिख रहा है solution के format में, right? I think that also adds a bit of clarity in understanding the program, because बहुत बड़ा problem ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये आसान है देखने में, आई कैन डू इट. द मोमेंट यू गिव देम अ कंपाइलर कि अब लिख के दिखाओ, एंड दे आर थिंकिंग लाइक कि पहली लाइन क्या थी, राइट? बिकॉज दे वर नेवर इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग कोड्स, बट ऑलवेज कि हो जाएगा, राइट? आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ विद द इजी अप्रोच, राइट? ट्राइंग टू सॉल्व एज इन लिखो, लाइक चाहे 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चंस लिखो एवरी सिंगल डे, इज व्हाट विल गिव यू अ छोटा पुश एंड विल हेल्प यू maintain the momentum. Yes. And it's always very important to note one thing. I have given a lot of interviews, but किसी भी इंटरव्यू में अभी ऐसा नहीं हुआ, टच वुड, किसी भी इंटरव्यू में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी भी इंटरव्यू में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मुझसे बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हमेशा इंटरव्यूअर तुमको समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? They want to understand how you think. It's always medium and sometimes it's medium hard. It's never hard. Right? तो अगर तुमने easy questions को master कर लिया और तुम medium questions को कर पा रहे हो, ठीक है? तो time bound approach के अंदर next 30 minutes 40 minutes के अंदर अगर आप एक medium question solve कर पाओ, it's well and good. ठीक है? Hard questions, I mean, if you are able to do it, that's amazing. Right? Nothing is better than that. But at the same time, if people are struggling, if students don't feel कि यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, then it becomes a little challenging. तब आप क्या कर सकते हो? तब आप बस easy medium questions के पास जाओ. Easy questions start अगर हो रहे हैं ना, तो medium question के पास you have to keep on challenging yourself. ऐसा नहीं है कि अब मुझसे मैंने 8 या 10 easy question देखे और मुझे सारे हो गए, उसके बाद में easy questions लगाऊं. हाँ, अगर तुमको लग रहा है 3-4 क्वेश्चन तुमसे इजी हो गए तो चलो एक काम करते हैं मीडियम क्वेश्चन करते हैं. 3 मीडियम क्वेश्चन हो गए, चलो एक काम करते हैं हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं. हार्ड क्वेश्चन नहीं हुआ कोई बात नहीं, let's read the solution. But don't copy the code, just read the solution so that you can write it on your own. And come back to the medium question अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है. 2-3 क्वेश्चन नहीं ही हार्ड वाले हिट है तो let's come back to the medium. वापस से प्रोसेस करते हैं, वापस से मीडियम क्वेश्चन करते हैं, फिर से हार्ड पे जाएंगे. That's how you gradually move from one level to, and that's how you become better programmer. Overall, if you are not, if the student is not clearly allocating a dedicated time and experimenting and learning and optimizing his approach every single day, या फिर वो consistency thing, I mean it is tough to be living on an assumption कि हो जाएगा. यार एक दिन में Great Wall of China नहीं बनती है. So it takes time. It takes a lot of time. So we'll jump onto this part, how did Flipkart come, and then so we probably have a very clear idea how you navigated during your college days and how you prepared and when you realized and all of those things. We'll move to the next phase where you are prepared now and the first company that comes in the campus. I'm expecting the Flipkart was on campus. No, I was not. Flipkart was not an on-campus company. Okay, that's another interesting thing. That's another interesting thing. So हुआ क्या कि when I was learning, right, during those time, I did not realize that I was learning, मुझे चीज समझ आ रही थी, but I was also cramming.
Oh, राइट। yeah. मुझे मैं ना काफी सारे सॉल्यूशंस पढ़ रहा था, पढ़ के सॉल्यूशंस ना दिमाग में आ रहा था, अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। तो हुआ क्या कि आई बिकेम गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसका सोल्यूशन दे पाऊंगा। बट द फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू विच इज आप कोड दीजिए, उसका सोल्यूशन टेस्ट केसेस पास होगा तब आप क्लियर करेंगे, दैट पार्ट स्टिल रिमेन वीक ऑफ माइंड, बिकॉज मैंने तो गीक्स से आर्टिकल्स पढ़े हैं ना, या मैंने लीड कोड पे कुछ कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बट आई नेवर एक्चुअली प्रैक्टिस द वो टाइम्ड वर्जन वाला पार्ट, जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया है और आप उस क्वेश्चन के टेस्ट केसेस पास करने की कोशिश करें। वो टाइम्ड वर्जन में तो कभी किया नहीं था। तो जब भी मैं टेस्ट देने बैठता था, या तो टाइम निकल जाता था, मतलब इवन आई वाज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बट देन देयर वर स्टूडेंट्स हु वर एबल टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और पास मोर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस देन मी, देन इट बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर मी। मैं कहा यार अब this will not work for me. So what happened was the whole August passed by, they were like 30-40 companies already passed by, and I'm like यार नहीं हो रहा है, क्या हो गया, क्या गलती, मतलब you start questioning yourself at this time, right? You don't understand कि यार what did I do wrong? So but then I didn't lose hope. मैंने कहा चलो इस टाइम भी पढ़ते रहते हैं, let's not lose hope, let's keep on understanding कि क्या गलती कर रहे थे. So you learn things slowly by slowly. And I remember the first company that visited on our campus from Tata. It's called Tata Health. Right? So Tata Health came and at around 5th of September, and there was coding tests and things like that. I was able to cover that. So वहाँ पे उस दिन मेरा interview clear हो गया. So they were pretty nice company. They were the starting package was not too much. It was 10 lakhs. So in the starting they paid me 10 lakhs की. मैंने कहा चलो कुछ तो मिल गया, अब देखते हैं. उस टाइम fourth year is very difficult अगर आपकी कंपनीज नहीं निकल रही हैं, क्योंकि it becomes mental stress. I don't want people to go through it, but I want people to go through it because it teaches you a lot of things, right? It teaches you कि हम mental pressure में, जब तुमको पता है आसपास वाले जो तुम्हारे दोस्त हैं उनकी जॉब्स लग रही हैं और तुम कह रहे हो यार हमारी क्या गलती थी, क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, ठीक है, तो उस टाइम पे तुम you start questioning yourself. I say it's okay to have that pressure, but just keep on maintaining that consistency, because these 4 years, I mean whatever will happen next year is just the start, right? उसके बाद बहुत कंपनीज आएंगी, तुम जरूर नहीं जिस कंपनी में तुम स्टार्ट करोगे तुम उसी कंपनी में रहोगे, ठीक है, you will start learning, so go through that mental pressure but don't lose yourself. ठीक है, so that is very very important. So I got my job in Tata Health. It was pretty nice company. I started working there next year once I graduated, but उस time I think I would call that the best time of my life so far. Why? Because then I actually fell in love with the coding. Oh, nice. Right? So I joined in June. In the July, August, September, when I started working, I realized क्या मजा आ रहा है इस लिंक लिस्ट बनाने में, ठीक है. You start appreciating things. जो चीजें मैंने कभी रट्टा मारी थी, मुझे समझ अच्छा इसका मीनिंग, इसका रीजन ये होता था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आती थी, क्यों आती थी, ठीक है. तो in the next 3-4 months, August, September, October, November, I started studying. Actually, not because I don't have the goal right now. I don't want to change. I don't want to switch. I just want to learn. Right? I don't have a goal, so I don't have any timelines bounded. कि नहीं आज तो मुझे 2 क्वेश्चन करके ही सोना है, कुछ भी हो जाए नहीं. I just wanted to. वो प्लेसमेंट का प्रेशर चला गया. अब बस तुमको लर्न करना है. अब बस तुमको देखना है कि क्या क्या चीजें हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने कॉलेज में कभी पढ़ा था, बस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अब मैं समझा कि अच्छा वर्चुअल मेमोरी का क्या मतलब होता है, अच्छा रैम कैसे यूज होती है, अनलीशिंग द पोटेंशियल. तब आपको समझ आता है अच्छा डेटाबेसेस कितना मजेदार था यार, उसमें ट्रांजैक्शंस में क्या लॉकिंग चलती थी. वो सब चीजें, अगर वो चीजों में आपको मजा आने लगेगा ना, तो जब आप सेकंड SG2 या सीनियर इंजीनियर बनोगे, वहां पे वो चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं. एंड आई हैव सीन पीपल ग्रो मोर इफ दे हैव दिस बेसिक कॉन्सेप्ट mastered, right? तो वो 3-4 महीने में मैंने बहुत मजे से किया. उसके बाद क्योंकि I was working in Bangalore, one advantage that I see of the city is that it gives you a lot of opportunities, right? Because there are a lot of companies out here. So I got an opportunity to interview with both Amazon and Flipkart, right? So उन्होंने जो interviews पूछे, I was able to clear them because इस time आपको नया क्वेश्चन भी मिलेगा तो आप कम से कम उसको सोच सकते हो. So I got offer from both, and I remember joining Flipkart in February, the next year, and that's how the actual journey began. So it has been a fun journey so far. उसके बाद जो भी कंपनीज में मैंने स्विच किए, उसका रीजन, उसमें कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि यार वापस से डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना होगा.
I always just revise कि अच्छा ये सब चीजें थी. Nice. I mean that's very interesting. I think you put it in a very practical way where you mentioned that this part, people are often confused. There's a very thin line. Am I cramming? Yes. Am I memorizing it, or am I literally understanding the things? Correct. There's a very thin line between that. Correct. And a lot of time we end up memorizing. And when we are given a compiler, उस time पे हम सोच रहे थे यार अच्छा इसमें 4 for loop लगते हैं या 3 for loop लगते हैं, and then we are writing the code, right? कॉलेज के टाइम आपको वो geeks की लिस्ट या फिर लीड कोड की लिस्ट याद होती है कि अच्छा ये 150 क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन कर लेते हैं, इन्हीं में से आएगा कुछ ना कुछ, या कुछ ऊपर नीचे हम कर सकते हैं. You end up memorizing those questions. ठीक है, कभी-कभी लोगों को ये people don't realize that, but they end up memorizing that. As a result of which it comes back in a very bad way. Yeah, correct. So one question out of curiosity, because you've worked with multiple companies, plus you are at a very senior role you've worked at a senior role in each of these companies. Is there any pattern in the hiring process have you observed, or sabhi company ka apna hiring process hai? Like that's a very interesting question. So when I was applying for Flipkart as an SDE, I remember हर गुड कंपनी, जो भी बड़ी कंपनी होगी, उनके साथ एक चीज हमेशा कॉमन होगी, दे विल नेवर आस्क यू अबाउट द टेक स्टैक. ओके, कि तुमको कौन सी टेक स्टैक आती है, क्योंकि हो सकता है मुझे जावा आती हो सकता है मुझे मॉन्ग स्टैक आती हो, बट वो लोग वो चीज टेक्नोलॉजी यूज ना करें. तो दे ऑलवेज जज यू ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. दे ऑलवेज, अगर 5 में से 4 इंटरव्यूज होंगे तो चारों के चारों इंटरव्यू कोडिंग के ऊपर होंगे. ठीक है, जहाँ वो तुमको जज करेंगे कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे, राइट. तो अभी तक मैंने Amazon तक जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, उनमें एक चीज हमेशा कॉमन रही है, दे ऑलवेज जज यू ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. दे आस्क यू इन द स्टार्ट कि आप C++ में कंफर्टेबल हैं या जावा में कंफर्टेबल हैं, उसके बेसिस पे आप C++ जावा में इंटरव्यू दे सकते हैं या पाइथन, जो भी. ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आपका रोल ग्रेजुअली इंक्रीज होता है फ्रॉम एंट्री लेवल इंजीनियर टू SD2 या सीनियर लेवल इंजीनियर, वहाँ पे द एडिशनल थिंग दैट दे आस्क इज सिस्टम डिजाइन. करेक्ट, कि आप एक ही प्रॉब्लम को SD1 से ही पूछ सकते हैं, SD2 से ही पूछ सकते हैं, सीनियर इंजीनियर से पूछ सकते हैं. आप उसका स्कोप बदलते जाइए. नाइस. ठीक है, SD1 से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा ये मुझसे 1 या 2 हिंट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा. SD2 से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा ये कोड इस तरह से लिखेगा कि इसके अंदर बग्स नहीं होंगे. सीनियर इंजीनियर से एक्सपेक्ट करेंगे कि कोड में बग्स तो होंगे ही नहीं, बट वो मेंटेनेबल भी होगा. ऐसा होगा कि अभी जो मैंने कोड लिखा है क्या वो 4-5 साल चल सकता है, क्या फ्यूचर में अगर कोई नया फीचर मुझे ऐड करना होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे कोड दोबारा से लिखना पड़े. ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन से हम SD1, SD2, सीनियर इंजीनियर, प्रिंसिपल इंजीनियर सबको जज कर सकते हैं, बस आप प्रॉब्लम का स्कोप चेंज करते जाइए. ठीक है, एन एडिशनल थिंग जैसे मैंने बोला सिस्टम डिजाइन. तो अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस और अपनी कंपनी में रिसेंटली काम किया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है कि क्या चीजें चलती हैं, लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, डेटाबेसेस किस तरह के डेटाबेसेस होते हैं, SQL नो SQL के डेटाबेसेस कौन से होते हैं. ठीक है, किस तरह की टेक्नोलॉजीज आजकल मार्केट में चल रही हैं. तो वो सब नॉलेज आप एक्यूमुलेट करते जाइए, आप सीनियर पोजीशंस के लिए भी इंटरव्यू दे पाएंगे. So there are 2 parts of this, where in one जहाँ पे बच्चा प्रिपेयर कर रहा है कोडिंग राउंड्स के लिए, which is more about practice. Correct. The more you write code, the better you become over a period of time. Correct. And the second part is where you are having interaction directly with the recruiter or the technical guy in the company. Correct. Which is more about you're done with all those problem solving, coding part. Now it is more about the person is trying to push your limits of the brain ki up to what extent you can think. Exactly. Right? Even सोच भी पा रहे हो कि नहीं. Correct. Right. I mean, not necessarily कि he needs 100% accurate all the time, but if you are able to reach, correct me if I'm wrong on that part, but if you are able to reach to a point where you are very close to the solution, I mean you are thinking in the right direction. And a lot of time I've also heard that people will give you some hints in between, will support you, you can counter question and maybe you involve yourself in the process of interaction. हाँ, तो यार at the end of the day interviewer is a person who wants to understand you, right? Because if you get hired, they will be the same people, they'll be your colleagues basically, जिनके साथ आप काम करेंगे. Correct. They need to understand you as a person, कि आप प्रॉब्लम्स को सोच सकते हैं. अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आपके कंफर्ट जोन में नहीं है, आप उस प्रॉब्लम को क्या सोच पा रहे हैं, राइट? आर यू एबल टू थिंक अबाउट क्या चल रहा है इस प्रॉब्लम के साथ? आर यू एबल टू आस्क
clarifying question कि अच्छा यार इसने question पूछा तो है, but it may have some edge cases जो इसने शायद पूछे नहीं, but they expect me to come up with that, right? तो धीरे-धीरे इस तरह के question, धीरे-धीरे इस तरह की skills build up करनी होती हैं. ठीक है. I think very interesting, the whole summarization part. I think this is second last question. So there's a lot of buzz around recession and all of these things, right? And students, जैसे आप बोल रहे थे कि back in when you realized कि placement नहीं हो रहा है, all of those things, you have a different kind of a pressure altogether. Correct. Right? How much of this recession, according to you, you might have understood industry, specifically you are here in Bangalore, how much of this recession in hiring is real? Because कई लोग एक तरफ बोलते हैं यार jobs की कमी नहीं है, right? तुम्हारे पास talent है, you know the subject, you're well with it, there is a job for you. And कई लोग बोलते हैं नहीं recession चल रहा है तो job की कमी है. Let's say technical side of recruitment अगर हम देखें, how much of this recession technology space में is like real? अगर मैं recent recession की बात करूँ, I wouldn't say it does not exist. It definitely does. Yeah. अगर कोई कंपनी पहले 10 लोग को हायर करी थी, शायद वो 2-3 लोग को हायर करेगी. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, इट्स अ टेम्पररी फेज. अब इफ आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट और आई नो कैंपस में कंपनीज कम आ रही है, तो आई हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट? बट कीप इन माइंड दिस इज अ टेम्पररी थिंग. फ्यू मंथ्स बाद वो चीजें रेक्टिफाई हो जाएंगी. जैसे अभी कंपनीज वापस से रिसेशन थोड़ा कम हो गया, कंपनीज वापस से हायरिंग स्टार्ट कर रही है, राइट? हायरिंग वापस may not be 10 की जगह वो शायद 8 या 7 लोग को हायर करें, बट दे आर डूइंग इट. तो हमेशा एक चीज याद रखनी होती है कि यू हैव टू ऑलवेज बी रिलेवेंट. देयर इज नो limitation of jobs for skilled people. There is always limitation for job for, because I've seen people who come say, hey, we are very good in C++, we are very good in problem solving. आप हमारे number of questions देखिए जरा. I'm talking about mid correct experienced people, not the college people, or maybe even the college people. आप उनसे बहुत basic git के question पूछ लीजिए कि version system कैसे काम करता है. It's a very important thing, क्योंकि जैसे आप कंपनी में आएंगे, आप कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं. कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करने का मतलब है जिस कोड में आप, जिस रिपोजिटरी में आप कोड कर रहे हैं, उसी में कोई दूसरा इंसान भी कोड कर रहा है. तो यू शुड नो हाउ दिस होल वर्जन सिस्टम. बहुत बेसिक चीज है, ठीक है? आपको बहुत बेसिक डेटाबेसेस के क्वेश्चन की इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, एटॉमिसिटी क्या होती है, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस. आई हैव सीन स्टूडेंट्स की जिनको C++ की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, जिनको जो बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होंगे, बट उनको ना बहुत बेसिक चीजें नहीं आएंगी. ठीक है कि यार डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो तुम्हारे करिकुलम का पार्ट है, बट यू जस्ट डिडंट स्टडी बिकॉज यू वर बिजी इन because you were busy doing hard problems. I'm not against it, I'm just saying make sure you are balancing everything, right? So when you go to the company, you are especially for mid level engineers, उनके लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि एंट्री लेवल इंजीनियर से यू डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट, बट फॉर मिड लेवल इंजीनियर्स यू एक्सपेक्ट कि अच्छा थोड़ा बहुत बेसिक कोलैबोरेटिव टूल्स आते होंगे, थोड़ा बहुत. दैट्स व्हाई अगर मेरे 5 इंटरव्यूज के राउंड है तो 4 अगर कोडिंग पे, तो एक राउंड हायरिंग मैनेजर होगा जिसके अंदर वो तुमसे पूछेंगे कि क्या किया तुमने अभी तक. लेट्स से मुझे 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि मैंने पिछले 2 साल को मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव आई वर्कड ऑन, उनमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, व्हाट इम्पैक्ट हैव आई क्रिएटेड, नॉट द नंबर ऑफ रेवेन्यू, नॉट एनी अदर मेट्रिक, जस्ट what I have done independently, what kind of problems I have faced, and how I have overcome them. Got it. Just to summarize, more, let's say on a broad level, the hiring process of any company out there, be it Tata, let's say Flipkart, Microsoft, Amazon, I mean, they're almost same. And the objective of all of these interactions that you're doing with the organization, maybe coding level pe, or maybe interviewer level pe, the objective is almost the same, right? So do you agree on that, or is it like बहुत अलग है? Yeah, let me put it this way. I have seen that some early stage startups, right? They focus more on the development part. जैसे आपको कोई stack आती है नहीं आती है, या because जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है ना, they have good amount of learning curve. In the starting 1 month, they will not ask you to write code. They'll ask you to learn about the technology. They'll ask you to learn about the environment around. So there is good amount of learning curve. But in case of startup, it's
in minimum early startups it's not the case. तो जहाँ पे यहाँ पे अगर मुझे 1 महीना स्टडी करने के लिए मिल रहा है, वहाँ पे शायद वो बोलेंगे यार 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में लर्न कर, उसके बाद let's give him some work. So these kind of things happen. Yeah. Right? The last question is, there's a lot of buzz around AI, right? GPT coming into the picture. There's so many X and YZ platforms. So people are scared about, specifically, every department is scared of all of these things, right? Correct. How relevant do you think that वो डर जो आ रहा है, AI जैसी चीज़ों को लेके, या things are going on the automation, how relevant that dar should be in people, and how one should, like, कैसे face करे उसको, like what is the solution for people who are in the development space, right? Because you guys are the one who is also developing the same thing, right? At the end of the day, behind the scene, right? So आपको भी पता है कि I'm creating, in general, we are creating our own replacement. Is that true to say that it's a replacement and stuff? Like, how do you see that part? So there are two ways to look at this. First is ChatGPT or any other kind of generative AI platform. They're not replacing you. They're replacing redundant things that you do. Right? Okay. For example, if I know कि let's say मुझे कोई Excel sheet भरनी है, an automated tool can do it better than me without any mistake, without making mistakes, right? So repetitive jobs जैसे system में alarm set करना है, ये सब चीजें they'll do better than automated tool will do better than us. But I think the way I see these generative tools is they work in conjunction with you, right? Okay. At the end of the day, the creativity and the ideas that you as an engineer can bring, it becomes very difficult for them to think out of the box and give us that kind of solution. So I think as long as you work in conjunction, you learn about these things कि मैं अपने day to day life में कैसे इन चीजों को use कर सकता हूँ, कैसे अपने आप को productive बना सकता हूँ, then it's a good thing, right? And also make sure that, जैसे मैंने बोला, redundant things should be eliminated, right? Exactly. I mean, because you, as I said, right, तुम्हारे chances of error are more as compared to the chances of error in platforms. Platform generated things. Second thing is, I'll grow along with that. I'll learn, and मैं अपनी day-to-day life में इनको use करूँगा. For example, अब चीजें ChatGPT वगैरह से पूछना कितना आसान है. You have a doubt. You have I don't know a bug in your system. You want to understand why is this happening. You want to think about it instead of searching or scraping the internet for half an hour. I would get a solution very instantaneously. Right? So my development time has increased. So I've become more productive. पहले जितना मैं products release कर पा रहा था, उससे ज़्यादा मैं products release कर पा रहा हूँ, right? It has helped me in a way कि I'll be learning along with it. But then again, I mean, जैसे जैसे technology grow करती है, you don't know the end of it. The end of the day हो सकता है generative AI से का next level भी आए, or who else will make it if not us, right? You'll have to adapt accordingly. Exactly, you'll have to adapt accordingly. Consider it as a virtual doubt solver. Exactly, right? अरे लोगों ने आग बनाई थी, अगर किसी ने आग जलाई थी तो थोड़ी था वो जला देगी. As long as you utilize it in the right way. That's a very good example. As long as you utilize it in the right way, it can either increase the chances. So you can use it as a mean of destruction or something. But at the same time, you can also use it to bring more life. Awesome. Really sorry we ended up taking a lot of time. Okay. That's it. But one quick suggestion that you would like to conclude this interaction with to the people who are right now applying to the companies, right? Going along with these thoughts of recession, and कैसे prepare करूँ, कितना prepare करूँ, right? Specifically people who are preparing, putting up a lot of effort, data structure stuff and all of these things, plus scared with the recession stuff. Like one quick, recommendation, suggestion, advice as a mentor you would like to share with them. Okay, so here is one thing that I have learned, is just take it with a grain of salt. Is that we have a metric of success. हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉलेज से निकलने के बाद तुम्हारे पास जॉब होनी चाहिए, नहीं होगी तो तुम सक्सेसफुल नहीं, ठीक है? कॉलेज में हो तो तुम्हें इंटर्नशिप होनी चाहिए, नहीं हो तो तुम सक्सेसफुल नहीं. तो यू हैव, आई मीन, हम लोगों ने एज अ सोसाइटी काफी मैट्रिक्स बना लिए हैं कि अगर ये नहीं होता तो आप सक्सेसफुल नहीं हो. तो आई हैव सीन a lot of students back in the US and other countries, they don't have those kind of metrics. So
I have seen people जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया या कुछ इस तरह के कोर्सेज किए हैं which are not related to computer science. They wanted to get hands-on experience. They just joined a boot camp. 3 महीने में उन्होंने कुछ खुद से प्रोजेक्ट्स बना लिए, सब कर लिए. That's how they learn, right? They are doing great things, right? So recession is a thing. I wouldn't deny that. I mean, it's obvious. There are less amount of jobs. It's fierce competition. But at the same time, as long as you have some patience, right? थोड़ा सा पेशेंस रखने की बात है कि चलो कैंपस में कंपनी नहीं आई, कोई बात नहीं. अगर 10 की जगह 2 कंपनी भी आएंगी ना, तो देर आर सम चांसेस. बट अगर मैं अभी होपलेस होके, अभी मैं डीमोरलाइज होके अपनी पढ़ाई छोड़ देता हूँ, या फिर अभी मैं वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करता जिसकी मैं बात कर रहा था, तो अगली बार वो कंपनी आएगी तुमसे नहीं निकल. क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की. उसके बाद तुम्हें लगेगा यार अच्छी खासी कंपनी थी, जॉब चलेगी. एक्सक्यूजेस 1000 हो सकते हैं फेलियर के, ठीक है. सक्सेस का एक ही रास्ता होता है कि हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन की. तो एज लॉन्ग एज यू गाइस मेंटेन कंसिस्टेंसी, आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ. अभी नहीं लगेगी जॉब, लग जाएगी. यू हैव 1 year. As long as you compare yourself with people around you, it becomes very difficult. तो एक बार कैंपस से निकल के तो देखो, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है. I will tell you one thing, you will always have good stories to tell. Nice. सक्सेस पहले मिले बाद में मिले नहीं फर्क पड़ता. So I think I'll just summarize what Mohit said. It's patience and consistency, right? It might take some time. It might happen faster for some other people. But if you have the dhairya, right, and if you are consistent with whatever effort you're putting, उसको break नहीं करना, क्योंकि आपने maintain किया है. ये recession को आगे देख के तोड़ ना दो पूरा, right? So if you maintained that streaks, not the Snapchat one, right? Please ensure that you are continuing with it. And don't feel demotivated. Slowly and steady things will अपने अपने जगहों पे आ जाएंगे, and things will fall where they're supposed to be. Yeah. So with that, thank you so much, right? Always. And yeah, that was it for this particular thing. And thank you so much for watching. Bye bye. Okay, bye.